Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with the following content of list to discuss. So let's start. The first topic says about the short tenure of CECs. So the article highlights about the recent Supreme Court views on the deficiencies in India's election commissioners appointment procedure as well as various number of solutions to address these shortcomings. Okay, so recently we could see that according to the Supreme Court, the government does not give much importance to the election commissioner's independence. And as evidenced by the reduction in tenures of chief election commissioners from over 8 years to just a few hundred days in 2004. तो पहले जब 1950 पे जब हम लोग इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट करते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, तो वो आराम से 8 years तक चलता था. ठीक है, आज ये लगभग 100 दिन तक टिकता है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर. So it's a cause of worry because this leads to some number of inefficiencies of the respective system. So today we could see that presently the election commissioners are appointed by the President of India on the aid and advice of the Council of Ministers. So this Election Commission Act of 1991 prescribes that the term of a CEC and election commissioners is 6 years or till the age of 65 years. Okay, so you can see that the SC, that is the Supreme Court, okay, they even also said that the Constitution of India has vested vast powers on the soldiers of the CEC as well as the two election commissioners. So apart from competence, the character is very crucial and show that those appointed as election commissioners will not allow themselves to be bulldozed. So in the absence of law to oversee such appointments, the silence of the Indian Constitution is being exploited by all. So now यहाँ पे गवर्नमेंट के रिप्लाई आया है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि there is no vacuum in the constitution on the issue. If the constitution takes a position despite multiple ideas put forward by the original constitution assembly, that position cannot be contested. Also, the separation of power cannot be challenged as it is directly the basic feature of the constitution. So this matter is for parliament to debate and not the court. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोर्ट यहाँ पे बोल देते हैं कभी कभी, जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर डायरेक्टली जुडिशियरी के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो यहाँ पे सेम अभी एग्जीक्यूटिव के रिप्लाई भी वही था कि लाइक यू शुड नॉट गो अहेड विद द सेपरेशन ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर. तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है. Okay, so judicial activism हो रहा है and through the basic structure and through this separation of power अभी यहाँ पे judicial restraint लगाया जा रहा है. ठीक है, किसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर. ठीक है, सो देयरफॉर दो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा इलेक्शन कमिश्नर्स जो आते हैं वो थोड़ा they should have some of the autonomy, they should have some of the powers, okay, to at least go against some number of corrupted politicians as well as the government so that we could find a good democracy in our country. Okay, तो ये तो है क्योंकि this election commission is directly the watchdog of the free and fair elections in our country. तो अगर यही काम नहीं करेंगे तो obviously we will have more criminals in the parliament rather than being our respective leaders. तो ये एक इशू चल रहा है जिसका रिप्लाई यहाँ पे आया गया है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. India Australia trade pact. Okay, so recently we could see that the Australia India Economic Cooperation and Trade Agreement, okay, जिसको हम लोग बोलते हैं AIECTA. ठीक है, so this was signed by the Australian Prime Minister for Trade, Tourism and Investment and India's Prime Minister for Commerce and Industry, Consumer Affairs and Food Public Distribution, जो कि पीयूष गोयल साहब है. उन लोग के तरफ से कौन आया था, डान टेहान बोल के. ठीक है, ये उन लोग का क्या है, ये उन लोग का ट्रेड, टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर है. ठीक है, सो ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इट विल फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज एट ईस्ट. So under FTA, that is the free trade agreement, two countries agree to reduce custom duties, regulatory law, subsidies, and quotas on products on the import-export, which will benefit both the countries. So this agreement makes the cost of production even cheaper compared to other countries, and the trade of the two countries is boosted, and the economy of the two countries is also getting boosted by such number of agreement. So now this needs to be approved, and this AIECTA needs to be approved by the respective parliament before it could be implemented. In India, such agreements are approved by the Union Cabinet and not by the Parliament. लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे पार्लियामेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी जाके ये प्रोसेस हो सकेंगे. ठीक है, सो हाउ दिस ऑस्ट्रेलिया इंडिया FTA इज वेरी मच यूनिक. सी इंडिया ऑस्ट्रेलिया FTA की FTA इज वेरी मच यूनिक. Supposedly, if I see about
द डेवलपिंग कंट्रीज और सम ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, सो यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक साइड अलग है, और जो इंडिया जापान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, ये बेसिकली सेम है विथ सम ऑफ द कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, साउथ ऑफ द कंट्रीज ऑफ द आसियन नेशंस। तो ये थोड़ा डिफरेंस आता है इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया। जो वहां पे हम लोग छूट देते हैं, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन के साथ हम लोग उतना भी छूट नहीं देते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का डेयरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर उन लोग का डेयरी सेक्टर हम लोग के यहाँ पे आ गया, देन ऑब्वियसली आवर डेयरी सेक्टर विल बी अफेक्टेड। ठीक है, बट through such number of agreements, obviously we will have some of the duty free access to the Australian markets, जीरो ड्यूटी एक्सेस रहेगा वहां पे। ओके, जो रूल्स ऑफ ओरिजिन है वो भी हम लोग टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे the signing of the India Australia Free Trade Agreement is a historic day for India and Australia relations, and is particularly important for India because it is the first agreement with a large developed economy in the last decade, and it covers the entire gamut of trade and commercial relations, removing various number of trade barriers and opening up plethora of opportunities in both goods and services. तो ये बहुत एक important agreement है जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं स्किल ट्रेनिंग फॉर एमजी नरेगा वर्कर्स। ओके, सो वी हैव सीन अबाउट दैट द उन्नति प्रोजेक्ट was launched to provide skill training to existing workers of the MG Narega to reduce their dependency on the scheme. And due to the weak response to Project Unnati, the Union Rural Development Ministry wants to link the performance of the state under the project with the MG Narega budget for the upcoming financial year. So since 2020, just a little over 25,000 persons have been trained on the Unnati project, falling short of its target of around 2 lakhs people. So what was this Unnati project? So this was launched to reduce the dependency on this MG Narega by providing skill training to existing workers. And under this project, one adult member of the household which has completed 100 days of work under MG Narega will be provided training through the Rural Skill Division of the Union Ministry of Rural Development and some of the Krishi Vigyan Kendras of the Union Ministry of Agriculture. So a family member in the age group of around 18 to 35 from the household will be eligible for training. And in that case of special groups, persons up to 45 years of age can apply. So under the project, the selected candidates are skilled through 3 established training programs. Basically, the Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana, okay, then Rural Self Training Institute रेटी एंड कृषि विज्ञान केंद्रस। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे टाइमलाइन था, लेकिन अभी हम लोग जानते हैं कि लाइक यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में ब्लेम गेम चालू हो गया है। ठीक है, कि अभी सेंटर बोलता है इट्स बिकॉज ऑफ द स्टेट, okay, is because of the states who does not wants to go ahead with such number of unnati schemes, such number of prevalence of the such number of schemes. तो यहाँ पे ये जो उन्नति स्कीम है ये टोटली फेल हो गया है। तो अभी भी स्टेट्स अपने आप को, अपने जो वर्कर्स है वो उसको बेसिकली अनस्किल रखना चाहते हैं। ओके, हु इज बेसिकली गोइंग विद दिस एमजी नरेगा। तो ये थोड़ा बहुत इशू चल रहा है, लेकिन अभी देखते हैं इन द लास्ट क्या होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे सेंटर्स ट्रेनिंग देना चाहते हैं, लेकिन सेंटर अभी जो ब्लेम गेम खेल रहा है विद द स्टेट्स, तो ये सही है या नहीं, ये तो आने वाले टाइम में ही हम लोग को पता चलेगा। ओके, सो बेसिकली यू शुड नो अबाउट व्हाट इज उन्नति स्कीम एंड व्हाट इज दिस बेसिकली एमजी नरेगा, याद रखना। ठीक है, चलो ग्लोबल स्लो डाउन। तो वी नो बिकॉज ऑफ द रीसेंट क्राइसिस दैट इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ग्लोबल स्लो डाउन है अभी। ओके, सो वी कैन सी रिसेंटली ये एक न्यूज में आया था कि द ओईसीडी कंट्रीज, ओके, it in latest economic outlook said that its primary scenario does not involve a global recession, but rather a considerable slowdown in global economic growth in 2023, along with a persistently high inflation rates in many nations that are nonetheless on the decline. Okay, so therefore we could see that यहाँ पे जो ब्रिटेन इकोनॉमी है इसको एक्सपेक्ट किया गया है कि ये लेग बिहाइंड करेगा ऑन इट्स काउंटर पास्ट। Okay, also a significant slowdown will be brought on by the biggest energy crisis since the 1970s in the coming time. Also, this report advised central banks to maintain interest rate increases. Okay, also Europe is suffering because of the Russia conflict in Ukraine, which has negatively impacted the commercial activity and has raised the energy prices. Okay, so all these regions are basically coming over here, and we have seen about the 3 major Asian economies, basically China, Indonesia and India, are anticipated to grow at a faster rate as comparison to the Europe or to the whole world. तो चाइना बोला गया है कि 4.6% ये ग्रो करेंगे, इंडोनेशिया 4.7% ग्रो करेंगे और इंडिया ग्रो करेंगे 5.7%। तो देख सकते हो, लेकिन यूएस हो गया, ओके, यूरोपियन कंट्रीज हो गया, इन लोग का स्लो डाउन ग्रोथ प्रोजेक्ट हुआ है। ठीक है, सपोजली इफ द ग्रोथ प्रोजेक्ट ऑफ अ कंट्री लाइक यूएस, तो इनका 1.8 से लेके अभी फिलहाल तक इन लोग 0.5% तक गिर जाएंगे टू 2023 तक, इनका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा।
तो ये बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि हाउ द कंट्रीज ऑफ द एशियन इकोनॉमीज आर डायरेक्टली गोइंग एट अ फास्टर रेट एंड हाउ दिस यूरोप स्लो डाउन विल इम्पैक्ट इंडिया, because after the US, China, and EU, the third largest trading partner, accounting for around $88 billion in goods trade, तो ये पूरा यहाँ पे रुक जाएगा. So it will have a much more implications on countries like India, and this global situation does not improve in coming months. So therefore यहाँ पे बहुत सारे steps हम लोग को लेना पड़ेगा. Supposedly going for various number of exporting restrictions and also excessive export taxes, ये सबको हम लोग को हटाना पड़ेगा. We should go forward with various number of lower trade deficit. We should think about this G20 merchandise trade. ये सब सोचना पड़ेगा इन दिस मल्टीलेटरल अफेयर्स, तभी जाके हम लोग ग्लोबल स्लो डाउन से आराम से टैकल कर पाएंगे. ठीक है, तो ये रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था, तो यहाँ पे वही बोला गया है OECD के द्वारा. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. ये छोटा सा एक न्यूज था, एंटीट्रस्ट लिटिगेशन ओवर कैंसर मैगजीन. तो लाइक यहाँ पे एंटीट्रस्ट लॉसूट्स होता क्या है? दिस आर टाइप ऑफ क्लास एक्शंस लॉसूट व्हिच इज फाइल्ड बाय इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज फॉर क्लेम्स ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस व्हिच लीड्स टू सम ऑफ द अनफेयर कंपटीशन, प्राइस फिक्सिंग और अदर टाइप्स ऑफ फ्रॉड. ठीक है, तो यहाँ पे ये डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के ऊपर एक यहाँ पे एक लाइक इंजाम लगाया है. किसने? इट इज बाय द यूएस अंडर द फेडरल एंड स्टेट एंटीट्रस्ट ट्रॉल्स ओवर कैंसर ड्रग रेवलिमिड. तो ये जो रेवलिमिड है, ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है तो पूछ दे सकता है. तो इसीलिए डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर यहाँ पे केस फाइल किया गया है यूएस के द्वारा, कि यहाँ पे ये लोग डायरेक्टली जो एक लिटिगेशन होता है, तो यहाँ पे वो लिटिगेशन ब्रेक कर रहा है. कौन? ये ब्रेक कर रहा है डॉक्टर रेड्डीज. तो इसीलिए यहाँ पे एक केस डाला गया है. तो अभी देखते हैं इस सुनवाई में केस में क्या होता है. ठीक है, छोटा सा एक न्यूज था. ओके, लास्ट में आते हैं. थिंक लोकल क्लाइमेट एक्शन. ओके, थिंक मिनान गाड़ी. तो यहाँ पे what it is directly saying, it says about the best practices by various gram panchayats in dealing with climate change. So the post-fast decades have shown a multifold increase in climate-related disasters, and the majority of the India's population lives in rural areas and is engaged in agriculture. So the greater variability in rainfall and temperatures due to climate change directly impacts the livelihood and overall well-being of the millions of people. So India's National Action Plan on Climate Change also identifies a range of priority areas for the national and the state governments. However, much better results would have been achieved if Panchayati Raj institutions were given a greater role. So moreover, it is necessary to involve the Panchayati Raj institutions in order to achieve the goal set out in Panchamrit resolution of the COP26, which was held in Glasgow 2021. Okay, so it is also important to have a local action plan for the enforcement and implementation of some of the climate policies. ठीक है, तो जो हम लोग का कार्बन न्यूट्रलिटी प्रोजेक्ट्स है अक्रॉस इंडिया. ओके, तो यहाँ पे एक आता है द केस स्टडी ऑफ मिनानगादी. सो मिनानगादी ग्राम पंचायत इज बेसिकली लोकेटेड इन द वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, व्हिच वाज एनविसाज्ड अ प्रोजेक्ट called as Carbon Neutral Minangadi in 2016. So the aim of the project was to transform Minangadi into a state of carbon neutrality. And it initiated campaigns, classes, studies, awareness programs, and a greenhouse gases emissions inventory was also prepared. So this Gram Sabha prepared an action plan after conducting socio-economic surveys and energy use mapping. And they went on for various number of social sector schemes, which were implemented to reduce emissions, increasing carbon sequestration and preserve the ecology and biodiversity. So one of the landmark schemes to aid carbon neutral activity was tree banking. So it encouraged the planting of trees by extending interest-free loans, and approximately 1,58,816 trees were planted and geotagged to monitor their growth. So this scheme saw the involvement of the entire community, including school students, youth, technical academic institutions, also in their proximity. And significant changes are viable after 5 years. So another thrust area is local economic development, where manufacturing of LED bulbs and other associated micro enterprises were initiated. So even I could take the example of one another village which is known as the Palli Gram Panchayats, which is basically a panchayat in Jammu and Kashmir. So it adopted a people-centric model with special local activities. So a climate resilient plan was prepared by the panchayat, making the villagers aware of the mitigation factors like reducing energy consumption, using solar energy, cutting down fossil fuels, eliminating the use of plastics, and promoting water conservation and plants. So we could see that such number of effort lead to establishing a solar plant of around 500 kilowatt, which was installed to power near about 340 households in the panchayats. तो देख सकते हो ये सब और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है. Okay, if you wants to study
study about the SEECHEWAL, सीचेवल ग्राम पंचायत. ओके, और भी अगर पढ़ना है तो ओदन थुराई पंचायत, ये भी पढ़ लेना. ये बेसिकली विंड मिल के लिए है. ठीक है. देन यू कैन इवन थिंक अबाउट द टिक्कर वादी, TIKEKARWADI. ठीक है, टिक्कर वादी, ये भी पढ़ सकते हो, ये महाराष्ट्र में है. ठीक है. देन यू कैन ऑल्सो रीड अबाउट द चप्परा पदाबू, CHAPPARAPADAVU, चप्परा पदाबू. ओके, तो यहाँ पे ये बेसिकली आइलैंड्स को प्रमोट करने के लिए है. तो ये जो थीम है आजकल का, इवन द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ऑल्सो स्ट्रेस लोकलाइजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑन अ थीमेटिक बेसिस. सो जो फिफ्थ थीम है हम लोग का SDG की, that is in regard to clean and green village. So here the activities covered under the ambit of this theme are biodiversity protection, natural resource management, waste management, and afforestation. Okay, so this integrated panchayat development plan prepared by all panchayats is also a stepping stone in addressing various environmental concerns of villages in our country. तो यहाँ पे यही सब डिस्कस किया गया है कि हाउ द रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज डीलिंग विद द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज वेरी क्रिटिकल as they are based on the principle of public participation. So these efforts needs to be documented, publicized, encouraged, and should be replicated all across the country to make India carbon neutral by the end of 2070. तो ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है अबाउट थिंक लोकल क्लाइमेट एक्शन, थिंक मीनाकाटी. ठीक है. तो ये जितने भी हम लोग ने बोला है, मैंने अभी बोला है अबाउट तिकर कवाडी एंड देन सिचोवाल एंड दिस ओदन थराई, तो ये सब थोड़ा पढ़ लेना. ये सब केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो. So this is all for today. We have got this 5 number of MCQs. Please do attempt these MCQs and also do join our WhatsApp as well as Telegram channel for further updates as well as free study materials. So that's all for today. Thank you and Jai Hind.